Hello gorgeous people, welcome back to my channel. So if you are new to this channel, hey, my name is Swati Rawat and I'll be very happy if you take a moment to subscribe my channel below. So without wasting time, let's get started. So today we will do a lot of formulas. Like in my previous video we did some formulas, but now we will do more formulas. So before starting my formula, we will do one question that is of absolute. So as you can see in my screen, I made a like product cost quantity total and तो इसमें क्या होता है लाइक जैसे मैंने प्रोडक्ट पे पेन लिखा है एंड कॉस्ट 90 एंड क्वांटिटी 6 10 11 10 एंड टोटल 540 निकाला इसको इनटू कर दिया है बट आई वांट कि आई डोंट वांट टू राइट कॉस्ट लाइक कंटिन्यूअसली एंड बट मैं चाहती हूँ इनका सबका निकल जाए लाइक लेकिन उसके लिए तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा लाइक तभी तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 50 एंड like 50 into 10 then 500 आएगा ठीक है बट मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना मुझे 90 जो कॉस्ट है सबका 90 आना चाहिए एंड एब्सोल्यूट में हम जैसे मैंने इसको इंटू कर दिया है तो हमें कुछ नहीं करना बहुत ही सिंपल है हमें यहाँ ऊपर जाना है एंड इसके आगे हमें F4 प्रेस करना है F4 एंड F4 पे आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर डॉलर का साइन बन गया दोनों साइड में एंड तो जैसे आप इसे डबल क्लिक करेंगे इसका सारा नीचे तक आ जाए जितना भी हमने लिखा हुआ है लाइक क्वांटिटी जितनी तक लिखी हुई उतना टोटल सबका आएगा सो सो सी कैन यू सी मैंने मतलब मुझे कॉस्ट दोबारा नहीं लिखना पड़ा इसका खुद ही मतलब ऑलमोस्ट इसको इंटू करके खुद ही आया है लाइक नहीं तो मुझे यहाँ पे 90 लिखना पड़ता लाइक सब जगह लेकिन नहीं आई डोंट वांट टू राइट कंटिन्यूअसली सो इसीलिए मैंने कॉस्ट एक ही में लिख सबका कॉस्ट एक ही है बट क्वांटिटी सबका अलग है ठीक है सो दैट्स व्हाई लाइक मैं आपको ये बताना चाह रही थी moving forward now we will do some formulas so in my previous video we did some formula of today now like these type of stuff now we will do more formulas so like is equal to we will do month like कौन सा मंथ चल रहा है इस समय so आपको मंथ लिखना है ब्रैकेट ओपन करना है एंड टुडे which mean आज and bracket open close bracket close and press enter like 8 8 मंथ चल रहा है अगस्त चल रहा है सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 8 आया है मूविंग फॉरवर्ड कौन सा ईयर चल रहा है टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर सो 2021 चल रहा है ईयर टुडे सो या इसके लिए यूज होता है मूविंग फॉरवर्ड इज इक्वल टू लाइक वीक डे कौन सा वीक डे चल रहा है टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज प्रेस एंटर like 1 week तक चल रहा है so moving forward week number today bracket close 34 week number चल रहा है moving forward कौन सा आर चल रहा है like now as you can see time here यहाँ नीचे पे देखिए so अभी हो रहा है 10 13 so इसमें 22 13 है उसका मतलब वही हुआ so या इसलिए 22 आया यहाँ पे that's why अब इसका स्क्वायर निकालना है मैं तो SQRT एंड 49 लिखना है आपको ऑफ कोर्स आप सबको पता ही होगा 7 का स्क्वायर 49 होता है 7 आया तो यह इसी चीज़ के लिए फॉर्मूलेस यूज होते हैं विच इज़ वेरी इजी एंड आपको इजीली आ रहा होगा पावर
2 comma 10 bracket close and press enter. So yeah, 2 की power 10 तो 1024 आएगा. Moving forward, अब हम करेंगे product, which is into 45 comma 3 comma 7 bracket close. Sorry. Okay, yeah, it's done. 9:45. See here, आप ऊपर देख सकते हैं. नीचे ये है. Moving forward is equal to len. Len is basically like जैसे मैं आपका यहाँ पे नाम लिखूंगी कुछ. So जितने भी उसके अल्फाबेट के नंबर होंगे, लाइक मेरा नाम स्वाति है and I have like 5 alphabets. So if I write bracket open inverted comma में स्वाति लिखा मैंने, कॉमा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड प्रेस एंटर. लाइक 5 आया. सो माय नेम हैज 5 अल्फाबेट, दैट्स व्हाई. अगर आप किसी और का लिखेंगे लाइक ओके आई वांट टू लाइक लेन लाइक संजना. ओके, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ओपन क्लोज कर देना, करना ना भूले, नहीं तो नहीं आएगा. एंड ब्रैकेट क्लोज. So Sanjana has 7 alphabets in her name. That's why it came 7. And my name has 5 alphabets. That's why it came 5. So जितना भी आपके नाम का होगा, so उतने ही alphabet लेंथ से उतना ही नंबर आएगा. So ये इसी के लिए यूज होता है, which is very easy. Moving forward is equal to left. So जैसे हम यहाँ पे लिखा राहुल कुमार and comma and 4 and bracket close. सो इसमें क्या है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे राहुल कुमार लिखा है तो मैंने लेफ्ट लिखा है. ऑफ कोर्स आपको लेफ्ट तो पता ही होगा. तो जो लेफ्ट जो नेम है राहुल कुमार, इसके जो लेफ्ट है, तो जो लेफ्ट की 4 नाम है, जैसे राहुल है राहु, तो राहु आएगा क्योंकि मैंने 4 चुना है, 4 लिखा है एंड लेफ्ट का चुना है एंड राहुल कुमार पे कंडीशन लगाई ऑफ कोर्स, तो उसका 4 राहु आएगा ऑफ कोर्स. सी. सो या इसी के लिए यूज होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, राइट वन. नाउ नेम इज प्रगति. प्रगति. इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना. आप इन्वर्टेड कॉमा लगाना ना भूलें, नहीं तो नहीं होगा एंड इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. तो सी गति आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट का चूज किया था एंड मैंने मुझे मैंने 4 चूज किया था. तो जो नाम है प्रगति, उसके जो राइट साइड है गति आएगा क्योंकि राइट साइड में गति आता है. अगर लेफ्ट चुनती तो पराग आता. तो इसी के लिए यूज होता है विच इज वेरी सिंपल. So that's it for the video. I hope you guys liking my video and I'm not letting you down. So please like my video, share, subscribe and like comment my video. So bye guys. Thank you so much.